Hi everyone. In CSAT PYQ series for number system, this is video number 6 and we are going to solve some more questions from 2022 in this video. With this, we are going to finish all number system questions from last year and then we will continue with some from 2021 from the subsequent video. So let us jump in and see the first question. The sum of three consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? तो क्या बताया गया हमको द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव जब भी कॉन्जिक्यूटिव बताए गए तो हम लोग हमेशा माइनस और प्लस का यूज करेंगे दैट वे द कैलकुलेशन इज इजी तो दिस इज a माइनस वन ए एंड a प्लस वन अगर ये 5 इंटीजर होते तो हम लोग a माइनस टू और a प्लस टू भी लेते लेकिन यहाँ पे 3 बोला है तो वी विल टेक थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फिर बोला है कि उनका सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट right? So basically they are saying that this number is equal to correct. So let us solve this. So this is minus 1 plus 1 and this is a plus a plus a. So this is 3a is equal to a minus 1 into a plus 1. You know, we can easily cut this a and a here, right? And that is probably the mistake that many of you may end up doing. But look at this equation, right? If you put a is equal to 0, then both sides become 0. So one of the values of a is 0, right? You know, there can be more values, and to find those values, you can, actually cut this and then basically say a minus 1 and a plus 1, which is nothing but a formula of a square minus square, right? A plus 1 and a minus 1, this is equal to 3. So a square is equal to 3 plus 1, 4. So a is equal to plus minus 2. So we got two more values of a. So what we are here saying is a के पीछे वाला नंबर आगे वाला नंबर when a is 0 तो ये बन जाएगा this, when a is 2 ये बन जाएगा this, when a is minus 2 then this will be this, right? Or this will basically be like this, right? Left hand side is sum minus 1 plus 0 plus 1 is 0, product minus 1 into 1 minus 1 into 0 is 0, both are 0. इसमें क्या हो जाएगा 3 plus 2 plus 1 is 6, 3 into 2 is into 1 is 6. इसमें क्या हो जाएगा 3 into 2 6 multiplied by minus 1 is minus 6, sum minus 2 minus 5 minus 6. So this is meeting, this is meeting, this is also meeting. How many such combinations did we get? We got 3 combinations. So your answer is option number C. इसमें एक ही दिक्कत है कि आप ये जीरो वाला पार्ट मिस कर सकते हो, राइट? जिसको थोड़ा अलजेब्रा आता है वो खटाक से ये एक को ये उड़ा देगा और ये दो वैल्यू तक रीच आउट कर जाएगा, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. See, one way to look at it, like when you reach at this equation, which is 3a is equal to a minus 1, a and a plus 1, तो इसको आप a into a square minus 1 square, a is equal to a square minus 1 ऐसे लिख दो, right? Which is equal to 3a. a cube minus a cube minus a, ये 3a को राइट में कर दो, 3a is equal to 0. इसमें से a कॉमन निकाल लो, so a is equal to a square minus 1 minus 3 is equal to 0. इसमें से this is a is equal to a into a square minus 4 is equal to 0, right? अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे. फिर आपको पता है कि this is 0 and this is 0, right? This can be 0, this can be 0. So then you are reaching a is equal to 0 and a square minus 4 is equal to 0. That means a square is equal to 4. फिर यहाँ से उसका रूट निकाल के आपको प्लस माइनस 2 मिल जाएगा, 0 तो मिल गया.
So if you continue to solve it in this fashion, you will reach there. यहाँ से आप एक 1 से 1 इसको a से a उड़ा के फिर सॉल्व कर दिया तो you will miss 0 and you will end up only with 2 values. Okay, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, otherwise this is a very simple question. चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं. What is the number of numbers of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digits? Distinct non-zero digits are from 1 to 9 and in this number also they are distinct. So यहाँ पे 9 possibilities है 1 to 9 का, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको छोड़ के यहाँ पे 1 to 8 आएगा. तो यहाँ पे 8 possibilities है, यहाँ पे 9 है, तो total possibilities are 72. Such a easy question. Your answer is option number A, 72. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच नंबर अमंग्स 2⁻40, 3⁻21, 4⁻18 and 8⁻12 is the smallest? This is the question. Again, I have solved in some other video, but because in this series it is fitting, I am taking it up again. इसको सिंप्लीफाई करना है, बेस कॉमन लेके आना है, राइट, व्हेन यू वांट टू कंपेयर. यहाँ पे 2 का बेस हमको कॉमन दिख रहा है, सो आई वांट टू ब्रिंग दिस एज 2 स्क्वायर इंटू 18 and 2 cube into 12. So this is 2⁻36 and 2⁻36. So these are basically two same numbers. So इसमें से कोई small या बड़ा नहीं होगा, right? And both these numbers are basically smaller than 2⁻40. So this cannot be smallest. These are same, so this also cannot be smallest. So the only option left is 3⁻21. This has to be smallest. So that's your answer option number B. Now, some of you may say that whether this is really true that 3⁻21 is smaller than 2⁻36. You can't even calculate this as well, right? But if someone wants to really check this, then you can see that in this we can see a common factor of 3. So I will take the common factor of 3 aside and write it as 3⁻7⁻3 and 2⁻12⁻3. अब आपको पता है कि जो नंबर बड़ा होगा उसका क्यूब भी बड़ा होगा, तो मैं ये क्यूब को इग्नोर करूंगा और बेसिकली 3⁻7 और 2⁻12 को कंपेयर करूंगा. आप अगर इसका सच में वैल्यू निकाल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर. So your answer is option number 3, option B, which is 3⁻21. इसके अलावा there are two questions. I have made another video on how to handle lengthy questions in CSAT. Please watch this video. यहाँ पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो लंबे क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ने में, समझने में, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. तो ये आपको पेपर में कब सॉल्व करने चाहिए, उसके लिए कैसा अप्रोच रखना चाहिए, करने भी चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स विथ दिस एग्जाम्पल. एंड देयर इज वन मोर, दिस एग्जाम्पल. दिस 2 क्वेश्चंस मैंने बहुत डिटेल तरीके से सॉल्व किए हैं, और ये सब बातों की इस वीडियो में, उस वीडियो में मैंने चर्चा भी की है, आपको कुछ टिप्स दिए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना. So with this, I am going to end this video. I am going to continue to bring you number system ka, I think maybe couple of videos. I don't want to make videos very long. And after that, I'm going to focus completely on the revision of CSAT formulae until prelims. You can DM me on Insta, you can comment on YouTube. And after prelims, I'm going to deep dive into individual topics of CSAT, as well as I'm going to start some geography videos. So please subscribe to my channel. It is really going to help you beyond prelims, and especially if you are a 24-25 aspirant. I'll see you in the next video. Thank you.